Am I live, my own? Just check. Correct. Hello, everyone. How are you all doing? Good evening. Good evening, Ayush. Hi, Abhishek. Hello, Biswal. Yeah, good evening, everyone. All right. For those who don't know me, my name is Ankusha Patil, and I am a student at IIM Rohtak. And soon I will be graduating, and I'll have my convocation in the month of April. And I'm also a YouTuber. I used to vlog about campus life inside IIM, and yeah, well, talking about today's session is actually very, very important and something that is essential for every cat aspirant to know. और एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होता है, सारे कैट एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है कि कब मॉक्स देना चाहिए, कितने मॉक्स देना चाहिए, शैल वी गिव टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट बिफोर वी स्टार्ट with giving actual mocks and so and so. So I'm going to be addressing all these questions, and I am super excited for the session. I hope you are too. If you want, we can wait for maybe 1 or 2 minutes for more people to join in. And yeah, if you guys have your friends, or if you have your Telegram group or WhatsApp group, you can share the link of the session with your friends and ask them to join the session so that they can also make the most of the session. वैसे भी sharing is the best policy. So jaldi se share kar do link, and let maximum people take advantage of this session. All right, thank you, Abhishek. Thank you for doing that. We're also very excited. Glad to know that, Ayush. So that's Parth. Your smile literally brightens up the atmosphere. Also, thank you for the guidance on cat. Okay, thank you very much. Hi, Rohan. Great, great. So we'll start exactly at 9:35. Let's wait for few more seconds. Hi, Alicia. I guess you guys are from my classes now. I remember your name. Alicia, I guess, have attended my free session on Unacademy, if I'm not wrong. I'm glad to catch up with you all here. Yeah, चलिए ठीक है. Yeah, I remember everything. Anyways, uh, coming back to today's session, आज के इस session में we're gonna be discussing about when to start taking mocks. ठीक है? Later, we're gonna be discussing about how many mocks should ideally one cat aspirant give. Thirdly, we're gonna be discussing how you should be attempting mocks. And fourth and the last thing that I will be taking up will be when to start giving sectional mocks and topic test. ठीक है जी, ये आज का कंटेंट है या फ्लो ऑफ कंटेंट है, whatever you call it. All right, great. Well, for those who don't know and who have not attended my free session on Unacademy, I wanted to tell you all that recently on March 16 एक नया बैच चालू हुआ है Unacademy का by the name Bullseye batch. इस बैच में I am mentoring the entire batch wherein I am having 10 sessions. उन 10 session में I am covering almost everything that an cat aspirant needs to know. Starting with, what exactly is an MBA, why you should pursue MBA, what are the exams that you should prepare for, how you should go ahead with that, then how can you kickstart your preparation, what all things I did, and how I finally got into IIM Rohtak. Then I have 3 master classes for VRC, DILR, and QA. Then I also have classes on guidance for GDPI and profile building. So there's a lot that's there for all the people who will be joining this Bullseye batch. And I am looking forward to you all to join this batch. And if you want discount, 20% discount, you can use my coupon code that is ANP22. If you want me to write it down, I can write it down in the chat box as well. That's ANP22 for maximum discounts. Yeah, great. All right. So, Abhishek,
what was your profile? Okay. वैसे तो I'm not allowed to share my profile, but the generic thing that is available on my LinkedIn as well that I can share with you. So I've done my graduation from Bhopal School of Social Sciences. I've done BCom in my graduation, and also while pursuing my graduation, I was a radio jockey, and that's my profile. What was your percentile of cat? Actually, until I don't get my degree, I'm not allowed to share all of this information with anybody. So due to all of that, I am not allowed to share. But once, I get my degree, I'm done with my convocation, and I'm out of the college, I'll be allowed to share all of it with you all, and I'll be more than glad to share with all of you, because I know there are a lot of people who are excited about it, and I'm equally excited to share that with you all. But let the right time come, and yeah, ठीक है जी. Let's begin with this session without wasting much time. So I've structured this entire what should I say, this session very systematically. So first of all, आप जब भी सोचते हो, the first step that you take towards CAT is deciding to clear CAT exam. ठीक है. The next step is preparing for it. तो पहला लेवल जो होता है आपका फाउंडेशन लेवल ऑफ प्रेपरेशन होता है. सो जब बात आती है टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल मॉक्स की, ये दोनों चीजें यू शुड स्टार्ट टेकिंग इन योर फाउंडेशन लेवल ऑफ प्रेपरेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रेपरेशन. बट फाउंडेशन लेवल ऑफ प्रेपरेशन में आपको टॉपिक टेस्ट लेना अटेम्प्ट करना होता है. फाउंडेशन लेवल ऑफ प्रेपरेशन एक सिंसियर स्टूडेंट आराम से 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट कर सकता है. In those 2 to 2.5 months, when you will have different targets for every subject, जब भी, for example, let's pick up the section QA, ठीक है. तो आपने एक टॉपिक लिया, आपने उस टॉपिक को कवर किया, ठीक है, और क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनको दोबारा लगाया. उसके बाद यू शुड बी टेकिंग टॉपिक टेस्ट, ठीक है. वंस यू आर डन विद योर फाउंडेशन लेवल ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज व्हेन यू शुड go ahead and start taking your sectional mocks. अब सेक्शनल मॉक फाउंडेशन लेवल ऑफ प्रेपरेशन में क्यों नहीं लेना है? बिकॉज सेक्शनल मॉक में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर्ड होंगे, ठीक है. तो अगर आप डे 1 से सेक्शनल मॉक्स लेना चालू करते हैं तो यू विल बी कंप्लीटली डिमोटिवेटेड, बिकॉज यू नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस सिंस यू हैव नॉट कवर्ड टॉपिक्स. बट अगर LOD 1 कंप्लीटेड है आपका, मैक्सिमम पोर्शन का, एटलीस्ट यू हैव कंप्लीटेड अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक्स है कैट के. इफ यू हैव इवन कंप्लीटेड दिस of LOD 1, LOD 2 इसका कर लिया है आपने, that is when you're ready to give your sectional mocks. And always remember this, guys, this is for every damn CAT aspirant, कि as a student, as an aspirant, you'll always think कि मेरा syllabus complete नहीं है and I'm not ready for this test. And that is why it is very important कि आप day 1 से अपने आप को आदत डालो कि आप टॉपिक टेस्ट दे रहे हो और फिर आप सेक्शनल मॉक्स दे रहे हो, ताकि जब फुल लेंथ मॉक आएंगे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गिव और टू अटेम्प्ट दोस फुल लेंथ मॉक्स. ठीक है जी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्टली आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द टॉपिक टेस्ट. तो फॉर पीपल टू अटेम्प्ट टॉपिक टेस्ट देयर इज अ प्रोसीजर. सबसे पहला स्टेप आप सभी लोगों को ये करना है कि कंप्लीट अ टॉपिक. That can be anything. That can be quadratic equation, for example. So complete a class. It can be a class जिस कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हो वो हो सकता है, या हो सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे हो तो वहाँ से वो टॉपिक कंप्लीट करिए खुद से पहले. उसके बाद द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू गो अहेड एंड डू इज सॉल्व दोज क्वेश्चंस व्हिच वर सॉल्व्ड इन द क्लास. व्हाई डू आई ऑलवेज से दिस? बिकॉज जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन टीचर आपके लिए लेके आए हैं. एंड टीचर कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं करवाते हैं कभी भी. दे हैव अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. दे ब्रिंग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस विद देम, questions which have different concepts, and that is why it is important for you to solve those questions again. Once that is done, next step is to solve the handout. Handout in the sense आपके कुछ क्वेश्चन बैंक मिलता होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक का. इफ Unacademy, if I talk about Unacademy, they have informed me that every batch has 25,000 questions with them to prepare for CAT. तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. तो उस टॉपिक का पहले हैंड आउट आप सॉल्व करो. once that is done, you can go and attempt your topic test. मतलब जो quadratic equation का टॉपिक है उसका आप टॉपिक टेस्ट दो. ठीक है. Once you have attempted that test and the score is
right in front of you, without wasting much time, start analyzing it. Now, how would you analyze it? Analyzing the solution. Uska bhi ek tarika hai. You will be looking out for two things. First thing, was your selection of questions right? क्या आपने easy and moderate level के questions solve किए? First thing. Second thing is, did you waste time? मतलब कि आप किसी एक क्वेश्चन में सॉल्व करते करते स्टक हो गए एंड इन जस्ट वन क्वेश्चन यू वेस्टेड 5 to 6 minutes. इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक दैट अ कैट एस्पिरेंट डज एंड सबके साथ होता है, मेरा साथ भी हुआ था. नॉट अ वेरी बिग इशू, बट यू हैव टू एनालाइज ऑल दोज थिंग्स. So analyze the solutions. And the third thing I would like to add is that अपने solution को और जो given solution है उनको compare करो. At times definitely हो सकता है कि आपकी भी जो solution हो that is much smarter, but you should be comparing both the solutions. ठीक है जी, I guess this much is clear to all of you. उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेक्शनल टेस्ट की. अब सेक्शनल टेस्ट की बात ऐसी होती है कि फर्स्ट यू शुड बी कंप्लीटिंग अ मेजर चंक ऑफ टॉपिक्स बोले तो अगर आपका अर्थमेटिक एल्जेब्रा या दो कोई टॉपिक ब्रॉड टॉपिक्स फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ज्योमेट्री कंप्लीटेड है, तो यू आर रेडी टू गिव अ सेक्शनल टेस्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू build a habit of giving topic test and sectional test. Because अगर ये यहाँ पे आपको habit नहीं हुई ना sectional test देने की और topic test देने की, तो आगे जाके when it will be the month of August, then you will be giving your full length mocks every week, at least one every week. That is when you'll find it very difficult because आपका score अच्छा नहीं आएगा. You'll get demotivated. You'll say कि अरे मेरा अभी syllabus complete नहीं हुआ है, I cannot attempt sectional mock. And it's a very big trap. But अभी से अगर आप अपने आप को खुद को practice करवाओगे कि no, you're habitual to giving test, then it'll be very easy for you and you'll be ahead of many people. ठीक है? तो second step for sectional test is after giving few topic tests, you have to attempt your sectional test so that the online interface of giving test is nothing new to you. You're habitual to it. फिर लास्ट अगेन यू हैव टू एनालाइज इट. एनालाइज करने का सेम तरीका है जो मैंने 3-4 चीज़ें पहले बताई आपको टॉपिक टेस्ट के लिए, सेम तरीके से हम अपने सेक्शनल टेस्ट को भी एनालाइज करेंगे. ठीक है? आर यू गाइज विद मी? जल्दी से यस प्लीज टाइप इन यस so that I know that you are listening to me and you're alive. All right. Great, fine, awesome. So coming to the full length mock test, अब इसमें क्या होता है ना, start giving full length mock test in the month of April. अप्रैल में आपको अपना पहला मॉक देना है अगर आपने अब तक मॉक देना स्टार्ट नहीं किया है या अपनी कैट प्रेपरेशन बिल्कुल ना फुल फ्लेजेडली स्टार्ट नहीं की है, तो अपना फर्स्ट मॉक आप दोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. I call that mock reality check mock for CAT 2023. And you have to promise yourself and to me that you're going to give that mock in the month of April. It can be at any time in the month of April because abhi March bhi nikalne hi wala hai bas, so I will not say otherwise. I recommended people to give that mock on 15th of April, but it depends on you. But April में आपको ये reality check वाला mock मिलने वाला है. जैसे आप ये mock दोगे, I'm presenting the reality to you that you'll be demotivated because first mock कभी भी किसी का बहुत अच्छा नहीं होता है. ठीक है? You always feel like कि मैंने तो इतना पढ़ा था, इतनी सारी मेहनत की, इतने घंटे पढ़ा, इतने टॉपिक कवर किए, but still the score is so low. That is completely fine. Do not get demotivated. और इस demotivation के वजह से do not hamper your habit of giving mocks. मतलब इस डीमोटिवेशन की वजह से पता है क्या होता है, मैक्सिमम लोग ना सोचते हैं कि नहीं मुझे मॉक देना ही नहीं है, मॉक की वजह से मेरे को डीमोटिवेशन आती है और मेरे को तो मोटिवेशन चाहिए गैट में, आई विल नॉट गिव मॉक्स. बिग ट्रैप. डू नॉट डू दिस. ठीक है जी. सेकेंड थिंग, आफ्टर अटेम्प्टिंग फ्यू टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट यू शुड बी गिविंग योर फुल लेंथ मॉक. कभी भी अपना फुल लेंथ मॉक एक सिटिंग में ही देना है आपको. ठीक है? अब कब कब कितने कितने मॉक देना है उसके बारे में बात करते हैं. मई, जून एंड जुलाई, इसमें अगर आप सिर्फ 1 मॉक पर वीक दे, इवन दैट इज इनफ. दैट इज अ गुड नंबर ऑफ मॉक दैट अ पर्सन शुड गिव. But right from the month of August, that is when you should focus more on giving mocks and
analyzing them. August, September, October and November में you should be giving 2 mocks per week. तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितने आपके मॉक्स हो जाएंगे. Let's say there are 3 months, May, June, July, 3 महीने हैं. There are 4 weeks in every month, तो 3 4s are 12. एक मॉक पर वीक, तो 12 मॉक्स ऊपर वाले हो गए. मई, जून, जुलाई तक यू विल बी डन विद 12 मॉक्स. ठीक है जी, क्लियर. देन कमिंग टू अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगेन 4 months, 4 weeks एट एन एवरेज मान लेते हैं. 16 हो गए, 16 इंटू 2 32, 32 मॉक्स यहाँ के हो गए. तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें 32 प्लस 12 दैट विल बी 44, राइट. तो इतनी मॉक्स 44 45 इज अ गुड नंबर ऑफ मॉक्स दैट अ एस्पिरेंट शुड गिव. ठीक है जी, फुल लेंथ मॉक वो भी एक ही सिटिंग में देंगे हम लोग. Next, moving on, this is very exciting that Unacademy is doing. They are conducting a test on different dates, 19th of March, 22nd, 26th, 29th and 2nd of April. They will be conducted by top educators of Unacademy, and wherein you guys will have 15 questions. It will be of 15 marks, wherein you will be given a time frame of 30 minutes. And yeah, these top 25 performers will also get personalized mentorship from the top educators, and also will get a voucher of 5,000. So all the best guys. I would really encourage you all to attempt the test. ठीक है जी, अब बात करते हैं हाउ टू गिव मॉक्स. नाउ सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे लिखी गिव मॉक्स, बिकॉज हमेशा कितनी बार ऐसा होगा आपको लगेगा कि नहीं मेरी प्रेपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है. मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरा ना एल्जेब्रा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा अर्थमेटिक ही कंप्लीट है, मैं एल्जेब्रा कर लेता हूँ फिर मैं अर्थमेटिक पे आऊँगा. तो ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप पे नहीं पड़ना है, एंड यू हैव टू गिव मॉक्स. ठीक है, प्रॉमिस दिस टू योर सेल्फ. एंड जब आप लोग पहुंच जाओगे ना मई जून में, तब आपके साथ ये सिचुएशन होगी, तो रिमेंबर मी, मुझे याद करना कि अंकुशा ने ऐसा कहा था. ये ट्रैप है एंड आई डोंट हैव टू फॉलो इनटू दिस ट्रैप. ठीक है. सो सेकेंड थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन इज दैट गिव इट इन वन सिटिंग. बहुत बार ऐसा होता है कि आप मॉक दे रहे हो, फिर वहाँ से, क्योंकि अब आप लोग ऑनलाइन मोड पे, हम लोग घर पे ही दे लेते हैं. हमें सब कुछ हमारे घर पे आजकल अवेलेबल है, वाईफाई है, सब कुछ है, तो हमें किसी नेट कैफे या कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो अब घर पे हो तो फिर मम्मी भी है, पापा भी है, भाई भी है, बहन भी है. तो क्या होता है कि मम्मा फिर आपको फ़ोन कर रहा है, या आपका रूम का दरवाज़ा खटखट कर रही है, या हो सकता है बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा कोई पर्सनलाइज्ड रूम नहीं है, तो मैं कैसे दूँ मॉक, और ये वो, इसके वजह से एक सिटिंग में मॉक नहीं देते हैं. मैं सच में बता रही हूँ, ये सब बहाने हैं. ये हम सब करेंगे, मतलब आप सब करोगे, और हम सब ने किया है जो IIM में बैठे हैं या अच्छे MBA कॉलेज में बैठे हैं. डू नॉट डू दिस. देखो, एक सिंसियर एस्पिरेंट के लिए तो ऐसा होना चाहिए मॉक देना कि अगर वो 2 घंटे मेरे को कोई परेशान नहीं कर सकता, आप घर पे बोल दो कि मैं आपके लिए हूँ 22 आवर्स, आप मेरे को जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे को इस 2 घंटे में बिल्कुल ठक ठक की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और मैं नहीं, मतलब मैं आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दीज 2 आवर्स, वेदर ऑन कॉल और ऑन और लाइव, यू विल नॉट बी अवेलेबल. यू शुड बी दैट स्ट्रिक्ट. मतलब ये चीज़ मैंने खुद की है. मेरे घर पे अगर मैं बोल दूँ ना कि मैं मॉक दे रही हूँ, तो कोई आता ही नहीं था नीचे मेरे रूम पे, तो कोई आता ही नहीं था. दे यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड कि अंकुशा डांटेगी कि उसका मॉक चल रहा है, मॉक डिस्टर्ब हो गया. और फिर मॉक अगर बीच में किसी ने ठक ठक किया और उसके बाद अगर ऐसा हो गया ना मेरे मॉक में स्कोर खराब आया, फिर तो पूरा फिर उसी पर चला जाता था कि आपने ठक ठक किया इसलिए मॉक में स्कोर नहीं आया, which obviously was never the case, but that happens. So take care of this thing, and deal it very seriously, because it is really important कि आप मॉक एक सिटिंग में दो. आपको आदत पड़ जानी चाहिए बाय द टाइम कैट विल कम कि 2 घंटा आप आराम से ऐसे बैठ पाओ. ठीक है जी, पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ. उसके बाद देर इज सत्यव्रता बिस्वाल आस्किंग सजेस्ट सम एडवाइस टू डील विद द सब्जेक्ट इन विच वी फील वी आर लैकिंग. एक्चुअली ना ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिस्वाल, क्योंकि डिपेंड्स ना, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है. VRC के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं, क्वांट के लिए अलग है, DILR के लिए अलग है. तो अब मुझे नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉमेंट हियर. यहाँ पर इंसान कैटेगरी में नहीं आता. आप किस समान, I do not come under any category, by the way, Mohammed. ठीक है जी, मैम क्वांस, ओके ओके. क्वांस के लिए saying suggest, क्वांस के लिए तो the only thing that I would like to say is that
कि प्रैक्टिस करो, बहुत प्रैक्टिस करो. इनफैक्ट इन द रीसेंट सेशन दैट आई हैड इन अनअकैडमी, आई वाज गिविंग द एंटायर स्केड्यूल टू देम कि किस तरीके से उनको अपने आगे के 6 महीने क्या बोलते प्लान करने हैं. उसमें आई टोल्ड देम कि आपको हर दिन 50 क्वेश्चन करने हैं. फिर आप कैसे करोगे उसको? स्टार्ट विथ सॉल्विंग 20 क्वेश्चन पर डे पहले वीक में, फिर इंक्रीज इट टू 25, देन टू 30, 35. इस तरीके से प्रोग्रेशन करो. एंड ऑल ऑफ दैट आई हैव मेंशन्ड ऑल ऑफ दैट, बट टू यू ऑल आई वुड से इज कि भाई प्रैक्टिस करो. जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आप टाइम लगाओगे, उसके बाद उस टॉपिक पे जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे, दैट इज ऑल यू नीड इन क्वांट्स एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू. ठीक है? आपका भाई आया क्लास में. यू गाइस नो माय ब्रदर आल्सो क्या? ऑल राइट, फाइन, लेट्स गेट बैक टू दिस, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट गिव मॉक्स इन वन सिटिंग. आई होप आपको समझ में आ गया ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन सिटिंग में मॉक्स देना. एंड प्रॉमिस मी दैट जितने भी मॉक्स आप देने वाले हो, यू विल बी गिविंग इन वन सिटिंग ओनली. राइट? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. एक थम्स अप दे दो. आई नो यहाँ, आई गेस यू गाइस कैन गिव थम्स अप हियर एज वेल, राइट? या, ठीक है. नाउ द थर्ड थिंग इज गिव इट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स. अब मैंने ये चीज़ इसलिए मेंशन की है, देखो टाइम अलग अलग टाइम फ्रेम में देना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नेवर नो कि आपका कैट का एग्जाम स्लॉट 1 में होगा, स्लॉट 2 में होगा या स्लॉट 3 में होगा. तो अगर आपने अपने आप को आदत डाली कि आप सुबह उठते से नहा के मॉक देते हो, तो आप किसकी आदत डाल रहे हो? मॉर्निंग स्लॉट की आदत डाल रहे हो, है ना जी? तो ये चीज़ आप गलत कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपका स्लॉट आ गया थर्ड वाला, थर्ड स्लॉट आ गया और आपने हमेशा मॉक सुबह ही दिया है, तो ये तो गलत चीज़ें हो गई ना आपके साथ. आपको हैबिट तो फर्स्ट स्लॉट की है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है. स्टार्टिंग से एक स्केड्यूल बना लो कि भाई मैं पहले वाले जो मतलब यू जस्ट स्केड्यूल इट एज इन कि पहले 2 मॉक मैं मॉर्निंग स्लॉट में दूंगा, फिर बाद के उसके नेक्स्ट 2 मैं दोपहर वाले स्लॉट पे दूंगा, एंड जो उसके नेक्स्ट 2 मॉक रहेंगे वो मैं इवनिंग स्लॉट में दूंगा. इस तरीके से स्केड्यूल इट प्रॉपरली. ठीक है? एंड ऑल्सो वंस योर एडमिट कार्ड्स विल बी आउट, वंस यूल नो योर स्लॉट एंड एवरीथिंग, उसके बाद तो फिर क्या करना स्टार्ट करना, जो भी स्लॉट आपको मिला है हर मॉक उसी स्लॉट के टाइम में देना. these are very very small things and negligible I must say, but these are really important and essential. छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है एंड दे ऑल काउंट. ठीक है जी? Then the fourth thing is tap a small take. That's not tap. I'm so sorry. That should be take a small nap before giving mock. This is really important. I always used to do because mock देने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कैट एस्पिरेंट का दिमाग किसी का भी बहुत फ्रेश होना चाहिए. एंड फर्स्ट सेक्शन ही आपका VARC है जहाँ पे आपको बहुत रीडिंग करनी है. एंड इफ यू समवन हु इज नॉट टू मच इनटू रीडिंग और डू नॉट लाइक रीडिंग वेरी मच, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटा सा नैप ले लो, थोड़ा सा फ्रेश फील करो और फिर अपना मॉक देना स्टार्ट करो. ठीक है जी? द फोर्थ और द फिफ्थ पॉइंट इज नेवर अफेक्ट वन सेक्शन फॉर द अदर सेक्शन. बहुत बार मॉक्स में ऐसा होगा कि आपका फर्स्ट सेक्शन ही बहुत डिफिकल्ट है. लेट्स से VARC आपका बहुत डिफिकल्ट है, but always remember that that first section was not just difficult for you, it was difficult for everyone attempting that test. तो जब नेक्स्ट सेक्शन खुले तो फर्स्ट वाले का प्रेशर या डीमोटिवेशन सेकंड सेक्शन में पास ऑन नहीं होना चाहिए. टेल योर सेल्फ काम डाउन, पहला सेक्शन सबके लिए डिफिकल्ट था, इट्स ओके. नया सेक्शन चालू हुआ है, लेट मी बिगिन फ्रेश. इस इस थॉट प्रोसेस के साथ यू शुड स्टार्ट योर नेक्स्ट सेक्शन. इट कैन बी इट कैन बी एनीथिंग कि आपका VARC काफ़ी अच्छा गया और फिर DILR बहुत टफ था, तो DILR की वजह से हमें क्वांट्स खराब नहीं करना है. यू गेट माई पॉइंट राइट? डू नॉट डू दिस. दीज आर मिस्टेक्स दैट एवरी कैट एस्पिरेंट डज वाइल गिविंग मॉक्स. मॉक क्या, इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मॉक्स में इतने अच्छे से अच्छे स्कोर आते हैं 150 140, बट मॉक जब वो अपना रियल कैट एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे तो कितना बढ़िया मतलब मैंने प्रेप किया हुआ है, और फिर उनका VARC इतना टफ आ गया, VARC उनसे अच्छे से बनानी, तो VARC के वजह से दे गाइस स्क्रूड देयर व्हाट यू से योर क्वांट्स आल्सो एंड DILR आल्सो. डू नॉट डू दिस. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. पता है कि हाँ ओके इस एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है. यू नेवर नो कि किसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब किसके लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम की. बट कितनी भी इंपॉर्टेंस हो इस एग्ज़ाम की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि
इट इज़ फाइन। अगर एक सेक्शन अच्छा नहीं जाता है तो उसका प्रेशर मैं सेकंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, एंड आई एम गोना start with a fresh mind. What's your approach in VRC? I've talked about this in a lot of detail in my Unacademy ke session. If possible, I'll also have a session of VRC strategies on YouTube also. So I'll request that, and if possible, I'll definitely come up with that as well. इस session में it's not possible to cover because there's a lot of content for that as well. ठीक है? Then the last second point that I wanted to tell you all that, pick easy and moderate level question. Remember guys, CAT is not just about a lot of hard work. It is more about smart work. Smart work in the contest, on context की, you should be able to pick easy and moderate level of question. अगर आप easy moderate level of question pick करना सीख गए ना, that is when आपका स्कोर बहुत एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज होना चालू हो जाएगा. So you have to learn this. You have to develop this approach. और ये कैसे develop होगी? By giving more number of topic test, then followed by giving more number of sectional test, and then giving more number of full length mocks. ठीक है जी? Then the last thing is learn to skip question. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ईगो पे ले लेते हैं. For example, my geometry was very good when I was preparing for CAT. तो geometry का question I used to be आया, मतलब I used to be very very super excited कि geometry तो मैं तो कर लूंगी ऐसा. फिर मैं सॉल्व करने बैठी. बहुत बार ऐसा हुआ कि एक ही क्वेश्चन में मैंने 5 मिनट्स बिताए हैं. तो दिस वाज अ ब्लंडर मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू मेक व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई लर्नड. आई वांटेड टू गिव यू ऑल अ सजेशन कि लर्न टू स्किप क्वेश्चन. आप पहले तो गॉज करो कि उस क्वेश्चन की क्या डिफिकल्टी लेवल है. अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट में क्रैक नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्रैक होगा, it's a red alert for you to skip that question. Do not wait and skip that question right away. ठीक है जी? That is all from how to give mocks. ठीक है? Next is when and how to analyze mock. सबसे बढ़िया चीज होती है, जैसे ही आपने मॉक दिया, 2 घंटे का मॉक था, टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर और एन आवर. या तो आप कुछ अच्छा खा लो या आप थोड़ा देर नैप ले लो छोटी सी, बट एनालाइज आप उसी दिन करोगे उस मॉक का. वाई डू आई से आपको उसी दिन करना है उस मॉक का एनालिसिस? क्योंकि ना चीज़ें आपको पता होती है. आपको पता होता है आपने ए क्यों मार्क किया इंग्लिश में, मतलब आरसी, सपोज आरसी में 4 ऑप्शन थे ABCD, उस 4 में से आपने ए क्यों मार्क किया एंड नॉट सी. आपको याद रहेगा जिस दिन आपने मॉक दिया उस दिन. बट वही अगर एनालिसिस आप 2 दिन बाद करोगे तो आपको वो रीज़न याद नहीं रहेगा. और अगर रीज़न याद नहीं रहा, मतलब आपका एनालिसिस जो हो रहा है मॉक्स का, वो बहुत वीक हो रहा है. समझ आ रही है मेरी इतनी बात? And that is why I will always recommend and request you all to please do analysis on the same day. At least English का तो please करो, because English में चीज़ें याद रखनी 2-2 दिन तक कि हमने क्या अप्रोच लगाई थी, क्या थॉट प्रोसेस था इस ऑप्शन को मार्क करने का, वो हम भूल जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है? यस मैम, एक क्वेश्चन में ही फंसे रहते हैं. तो प्रियंका, डू नॉट डू दैट. मुझे पता है ये मिस्टेक बहुत कॉमन मिस्टेक है. तो कभी भी ऐसा लगे ना कि 1 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन एंड यू आर गेटिंग स्टक, skip that question. There are questions which are meant in CAT exam to be skipped. So they are there to be skipped. तो skip करो ना भाई. क्यों, why to fall into the trap? Right? Remember that. ठीक है जी. The second thing that I wanted to tell you is that solve the entire question paper again. आपने मॉक दे दिया, एनालिसिस उसी दिन करना हमें स्टार्ट करना है. कैसे करेंगे? हम क्वेश्चन पेपर को दोबारा सॉल्व करेंगे. ठीक है? दोबारा सॉल्व करने के बाद जब पूरा सॉल्व हो जाए, उसके बाद वी विल बी रेफरिंग टू द सोल्यूशन. हाय महेश. ठीक है? तो वी विल बी रेफरिंग टू द सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन को रेफर करने के बाद हमें क्या चीजें करनी है, मैंने पहले भी आपको बताया. क्या करोगे? एनालाइज. फर्स्ट थिंग, एनालाइज द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. मतलब जैसे ही आपका मॉक खत्म हो जाता है, आपका स्कोर बोर्ड आता है. स्कोर बोर्ड के बाद एनालिसिस बोर्ड भी आता है, जहाँ पे ना ऐसे ही कुछ बार्स बने रहते हैं इजी. जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शंस बने रहेंगे, VRC, DILR, क्वांट्स. ऊपर रहेगा इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट. फिर इजी के नीचे रहेंगे कि 2, 5, 6 एंड 10 वर इजी क्वेश्चन. तो यू हैव टू सी दैट डिड यू अटेम्प्ट दीज इजी क्वेश्चंस, डिड यू अटेम्प्ट दोज मॉडरेट क्वेश्चंस. इससे आपको एनालाइज करना है और अपनी डायरी में लिखना है, मॉक डायरी, जिसके बारे में आगे बात करूंगी मैं, कि हाँ, आई वॉज एबल टू मेक द राइट
selection of questions. या अगर आपने नहीं किया तो you have to write in the diary you were not able to do it. And why were you not able to do it? That you have to find through your analysis. और कैसे find करोगे? Through analyzing the solution. जिस भी आपने रजिस्टर में अपना सोल्यूशन किया है मॉक का, what you'll simply do is you'll compare your answers with the solution given in the mock analysis. You'll compare it on the basis of क्या आपका सोल्यूशन बेहतर है, या बहुत बार ना अच्छी अच्छी ट्रिक्स, अच्छे अच्छे मेथड्स और फॉर्मूलाज दिए रहते हैं मॉक के एनालिसिस के पार्ट में, सोल्यूशन वाले पार्ट में, तो उनको कंपेयर करना स्टार्ट कर दो. एंड द लास्ट थिंग दैट आई मेंशन्ड इज नोट डाउन मतलब noting down things. Ki we'll talk about that. Well, we're gonna be talking about that. Yeah. Here comes the most important thing, which I would want all of you to have. That is a mock diary. Mock diary is very very special. मॉक डायरी में सिर्फ 4 चीज़ें हमें मेंशन करनी है. एक डायरी बना लो अपनी, ठीक है. पहली चीज़ हम मेंशन करेंगे मॉक नंबर. लेट्स से मॉक 1. मॉक 1 का हम लिखेंगे सबसे पहले उसके ऊपर करंट स्कोर, ठीक है. जैसे ही हमारा करंट स्कोर हमने लिख लिया, उसके बाद हम लिखेंगे मिस्टेक. अब मिस्टेक्स, अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया है, यू विल नो योर मिस्टेक. Mistakes can be as simple as doing silly mistakes, wrote wrong numbers in QA section, picked wrong questions in QA. उसके बाद फिर VRC में गट फील लगाई. तो जो भी ऐसे लैंग्वेज में लिखो कि जो आपको समझ में आ जाए. समझ में आती है इतनी बात, तो मिस्टेक सेक्शन में ये सब लिखना है. एंड द लास्ट सेक्शन शुड बी ऑफ लर्निंग्स. मेरे फोटो की वजह से वहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बट मिस्टेक्स के बाद है लर्निंग्स का सेक्शन. लर्निंग्स में लिखेंगे कि अब हमने क्या सीखा इस मॉक के एनालिसिस, ठीक है. एंड यहाँ पे ये प्रोसेस खत्म नहीं होती है. Before we attempt our next mock, it should be your duty, 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 to come back to this diary and see कि आपकी mistakes क्या थी, आपकी learnings क्या थी और आपका score क्या था. So that you do not repeat these mistakes again in your next mock. Always remember guys, अगर आप अपनी mistakes को repeat करते जाएंगे, you will never be able to increase your mock score and you will never be able to perform well in your real CAT exam. जिसका एनालिसिस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा अपना मॉक स्कोर. और एनालिसिस अच्छा मतलब उसको पता होना चाहिए कि व्हाट आर हिज और हर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मिस्टेक्स क्या है, लर्निंग्स क्या है. दैट इज ऑल इट. ठीक है जी. इसके बाद अगेन अनअकैडमी हैज़ कम अप विद रोड टू IIM, जहाँ पे 6 सिटीज़ में टॉप एजुकेटर्स जाएंगे एंड दे विल बी हैविंग 1-to-1 interactions with you all. So if you guys have any doubt related to anything or related to CAT exam or MBA colleges or anything, you can ask them. And these are the 6 cities: Bangalore, Lucknow, Jaipur, Delhi, Chandigarh and Ahmedabad. Following are the dates and following are the educators. So I guess this is a huge and a great opportunity for all the educators जिनको CAT के बारे में कोई भी doubt हो तो you will be open to ask all of it. That's it. How many mocks did you give while preparing? I gave around 44-45 mocks. ठीक है जी. मेरे सिटी में नहीं आ रहे. ओहो. Which city are you from, Alicia? Great. I guess that's it. Now, if you guys have any doubts, let me know and we'll end this session. That is it from my end because इंदौर में है. Mahesh, you can see on the board itself, right? इंदौर में नहीं है. You're from Patna. Okay, great. Great. You guys have any doubts related to mock giving strategies? When to give, how many to give, or blah blah blah? Is this something we can try? What do you want to try? Sectional mocks, which platform to use? I don't know if you have Unacademy's subscription or not. If you don't have, they have 25,000 question bank and they are really good questions. So you can definitely give your sectional mocks from Unacademy's platform. If you're willing to join it, you can also use my coupon code ANP22 for maximum discount. You have it. Great then, no? If you already have it, it's awesome. Great, great Swati then. Great. You can make use of it.
He mentioned he didn't attend any VRC classes and only gave mocks and practice question. He went from 48 percentile to 98. See, yes, it actually depends from person to person, Atmaram, I guess. That does not happens with everyone. So, ध्रुव is saying 100% डिस्काउंट कूपन. नो 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 नो. मैक्सिमम जितना भी डिस्काउंट आपको अनअकैडमी में मिल सकता है वो आपको ANP22 कूपन कोड यूज करके मिल सकता है. Is Unacademy mock enough? Yes, they are enough. If you want to get a job in IT company, what specialization should I take for MBA? इन सब के बारे में मत सोचो रोहन, बिकॉज आपको MBA में पूरा एक साल मिलता है when you have time to decide on कि क्या स्पेशलाइजेशन आपको परस्यू करना है. ठीक है, सो डू नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट डिपेंड्स ना IT कंपनी किस रोल के लिए MBA कॉलेज में आ रही है, और उसमें भी बहुत सारी स्टोरी है. ब्लैकी में अलग रोल के लिए आती है, बेबी IIMs में अलग रोल के लिए आती है, न्यू IIMs में अलग रोल के लिए आती है. So there's a lot to explore for you. So when the time will come, you will do that. Yes, there were a lot of classmates in my college who had gap years. In fact, there were many who had even 2 years of gap year. So do not worry about gap year. Towards the end, there are 20 people, and in the beginning, there were around 14, 15 people. Yeah. Any other doubts, guys? I'll pick all the doubts that you have, and we'll end the session once you guys will be done. जल्दी जल्दी पूछ लो. No doubts? No, no, I did not prepare for MA at CET. No, no, I did not. I only prepared for CAT. I only appeared for CAT. Ma'am, have you finished your MBA yet, or are you in the last phase? So I'm in the last phase, you can say. I'm done with my classes, I'm done with my farewell, but my convocation is still left. So yes, I'm in the last phase. Still about MBA after MBBS. So Himanshu, I had a lot of friends in my college as well who were doctors. They did not do MBBS, I guess they were dentist. तो लोग करते हैं डॉक्टर के बाद भी MBA. It's not a very big deal. You'll get people from diverse background once you get into an IIM. मैम अब आपकी क्लास 21st मार्च को है, तब तक रिविजन. यस प्लीज़ आयुष रिविजन करो अच्छे से. अभी आपको बताया, आज तो पूरा प्लान करके बताया कि किस तरीके से आपको आगे के पूरे महीने प्लान करनी है, कितने क्वेश्चन करने हैं हर दिन, तो वो सब करो, डेली टारगेट बनाओ. हाउ हार्ड इज MBA लाइफ, रेट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. तो देखो फर्स्ट ईयर इज़ वेरी हार्ड, तो फर्स्ट ईयर को आई रेट 9-10 में से. एंड अगर मुझे इनिशियल 3 मंथ्स बोलने हो तो 10/10 या 11/10 दूंगी. सेकेंड ईयर इज चिल, बट देन इट्स अप टू यू हाउ यू मेक द मोस्ट ऑफ योर सेकेंड ईयर. Second year is 6-7. Yeah. How to build one's profile. So I'm gonna have a session on this, on building profile. So if possible, I'll have that session on YouTube as well. Because it's a broad topic, no, Swati, so it's not possible for me to cover it up here in this session itself. So Syed Ismail is saying, I'm scared. I'm currently pursuing engineering, but I plan to give CAT. I heard engineers are really grilled. No, it is not like that. No, 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 no. Since you're an engineer, a lot of people feel like engineers have an edge over others, right? Because they are good to go with maths and DILR. So don't be afraid, or don't be scared at all. Be confident. You're gonna do good. Just put in your determination, your consistency, and perseverance. These are three things, three guru mantras for CAT. हाउ टू कंप्लीट वर्बल पार्ट. वर्बल तो बहुत ईजी होता है, ऑनेस्टली बहुत ईजी होता है. आई हैव अ सेशन, सिंस मेरे हिसाब से दूसरा या तीसरा इंसान मुझे यहाँ पे बोल रहा है वर्बल के बारे में, सो आई हैव अ सेशन ऑन YT एज वेल for VRC strategies for CAT 2023, and we'll rock in that session. There's a huge content for verbal, and आप एक बार वो attend करोगे ना session, तो you'll understand that verbal is not that tough. It is just about developing a habit of reading, and there are some things that you need to do. If you do it consistently, it's not that tough. ठीक है जी.
Reading comprehension is not tough. I'll tell you how to do it. There are a lot of techniques to it. I'll definitely have a session on VRC now because शायद दूसरा तीसरा इंसान बोल रहा है, तो I guess you guys need it. So I'll have a session on that. What's your specialization in MBA and which role you get in internship? Internship, my role was product manager, and my specialization is in marketing and operations. Okay, Omkar, fine, I got your point. If possible, I'll take a session on build profile. I've been taking all these sessions in Unacademy's classes actually. So yeah. Syed Ismail, since I'm still pursuing engineering, I'm in the second year. Can you tell me things to do improve my profile? We'll talk about the profile building का entire session ना उसी session में बात करते हैं. It's long just because age factor does not matter. There was there was a woman with the age, I guess she was 35 in our college. 35, yeah. The age though does not matter, not at all. Where can we get notification of a VARC session? Do you have a Telegram channel like other educators? No, I still do not have any Telegram channel as of now. But मेरे हिसाब से you can follow me on my Instagram handle. वहाँ पे मैं हमेशा update करती रहती हूँ whenever I have a session here on Unacademy's YT channel. So yeah, you can get the notification from there. Okay, 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 okay. I got Pranoya Dash. I'll have a session on what do you say, profile building and so. No, 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 you're not aged, Swati. I guess it's time to sum up this entire session now. I hope you all enjoyed the session, and let's meet again and catch up again in the next session then. If possible, I'll have a session on VRC strategies for CAT 2023. Okay, Ji. Bye bye. Take care of yourself and your loved ones. Bye bye. And work hard. All the very best. Yeah. Bye bye.